Hello, dear students. Welcome back once again to Business Studies with Anubha, chapter Financial Management, topic Meaning, Role, and Objectives of Financial Management. So, as you have already studied in class 11th, that any kind of business requires finance. That business finance is required or it is needed to establish the organization or to start the business, and not only to establish and start the business but to run its day to day operations, day to day activities like purchase of raw materials or to pay the salary or wages of the laborers and the employees, etc. Then it is also required, the business finance is also needed for modernization, expansion, or diversification of business. Modernization is needed so that they can upgrade according to the advanced technology, and expansion is needed so that the business grows or it opens new branches or outlets. Diversification when it chooses to add a new product line to its product portfolio. So all these also require the finance. Then purchase of tangible and intangible assets. Now tangible assets means those which can be seen or touched, like building, factory, furniture, etc. Intangible assets means like patents, trademark, technical expertise. Now that is intangible because it cannot be seen or touched, but it is an asset for the company because it adds value to the organization's worth. Then financial management, that means to manage this finance, is financial management. So it refers to efficient acquisition of finance, efficient utilization of finance, and efficient distribution and disposal of surplus for smooth working of the company. Now, there are three main aspects in the financial management which we know these aspects as the main major financial decisions, okay, that we are going to discuss later in the other videos. So for now, let us understand acquisition of finance means, you know that there are various sources of business finance like public deposits, lease financing, commercial paper, shares, debentures, loans from banks, etc., or financial institutions. So from where to acquire the finance and on what basis, like how much cost is involved or how much risk is involved in each source of finance. After calculation of all that, acquisition of finance from the source which provides them efficient or optimal procurement. That means optimal or efficient procurement or acquisition means to identify and compare the various sources of finance in terms of cost and associated risk. Now you know that debt has less cost of raising debt is uh, raising debt involves less cost, but the risk associated is high because there is an obligation on behalf of the company to pay the interest to the debenture holders because it is a kind of debt loan. Okay, so on the basis of that, to find out which is the best suitable source of finance. Then efficient utilization of finance. Now not only acquiring or obtaining finance is important decision, but investment decision is equally important because we cannot waste that money which we have obtained after so much of efforts. Optimal or efficient usage or utilization or allocation of funds is also one of the major decision of the financial management. It means investing funds such that the returns exceed the cost of procurement. हमने जिन भी सोर्स से ये पैसे रेस किए हैं उसमें जितना हमको कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ है उससे ज़्यादा हमको इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में रिटर्न अगर मिलता है तब तो वो हम उसकी उसे हम चूज़ करेंगे. Then next part of this meaning is efficient distribution and disposal of surplus. Now when the company earns profit, then it will distribute the dividends to the shareholders and interest to the debenture holders or to the bank. That means this is distribution, that is known as the dividend decision, distribution and disposal of the surplus. Now you know that
loans from banks or borrowings from banks and financial institution, because it is a debt, their interest payment comes prior to any other payment to the dividend of dividend to the shareholders. Equity shareholders are the residual owners because they receive the dividends at last. So this decision about distribution and disposal of surplus for smooth working of company is also a part of financial management. Now let us look at the definition given by Joseph L. Massey. The definition says financial management is the operational activity of business that is responsible for obtaining and effectively utilizing the funds necessary for efficient operations. So more or less it is similar to the meaning which we have discussed just now. Here obtaining is acquisition of fund and utilization means its usage, its investment in such a manner that it results in efficient operations, smooth working of the company. Now this we have understood. While explaining this, I have told you that. Then let us come to the role of financial management. So basically the role of financial management is to maintain the financial position or health of the company, which is reflected in its statement like balance sheet or income statement. अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी तरह किया जाता है तो उनका जो फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल हेल्थ है कंपनी का, वो उनके बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है कि ये एक साउंड फाइनेंशियल पोजीशन वाली कंपनी है. नाउ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट role of financial management can be studied under these 5 heads. First is size and composition of fixed assets. Now you know that the fixed assets decision is irreversible. मतलब ये fixed asset जो है long term के लिए जो funds है उसको block करता है. तो अगर there is over investment, अगर हम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा fixed asset में investment कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज ऑफ फंड्स हो जाएगा. और अगर बहुत कम इन्वेस्टमेंट होगा तो कंपनी को ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा. जैसे बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है सपोज़ कोई नया मशीन इंस्टॉल करना है, अगर उसकी क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर हमने उसे जुडिशियसली यूज़ नहीं किया तो दैट कैन बी ब्लॉकेज ऑफ फंड्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Then second decision or second aspect related to the role of financial management is quantum of current assets and its breakup into cash, inventories and receivables. So जितना important fixed assets का composition को check करना है, उतना ही important जो है current assets की quantity और उसका इसकी composition को check करना है. क्योंकि जैसे fixed asset में suppose हमने न्यू मशीनरी खरीदी या नया प्लांट इंस्टॉल किया. अब चूँकि नए प्लांट के साथ हमें उसको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल्स भी ख़रीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स के अलावा लेबर. तो इस तरह से ये जो जितना भी हमारा करंट एसेट्स है वो भी हमें बढ़ाना पड़ेगा. उसके साथ क्रेडिट पॉलिसी जो कंपनी की होती है उस पर डिपेंड करता है कि उसके रिसीवेबल्स कितने होंगे. अगर क्रेडिट पॉलिसी बहुत लीनियंट है तो रिसीवेबल्स ज़्यादा होंगे. इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इन्वेंट्री पोजीशन क्या है. तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर आल्सो डेल्ट विथ बाय द फाइनेंशियल मैनेजर. देन अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. अब हमने क्या बोला कि एक्विजिशन ऑफ जो फंड्स है इट कैन बी फ्रॉम द लॉन्ग टर्म सोर्सेज, फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेज. अगर कंपनी को अपनी लिक्विडिटी पोजीशन मेंटेन करनी है तो मे बी दे विल गो फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, बट दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट इट्स प्रॉफिटेबिलिटी. अगर वो अपने वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो वो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म फंड्स पे डिपेंड करें, लेकिन इससे लिक्विडिटी तो आ जाएगी लेकिन ये उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा. तो इस तरह से उन्हें बहुत ही जुडिशियसली ये चूज़ करना है कि किस तरह से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैसे करना है और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उसके लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस. फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस से एक छोटा सा कॉमन डे टू डे एग्जांपल ले लेते हैं
कि if a person has to purchase a house, he will depend on the long term finance. Okay, and if he has to purchase the daily need goods and he does not have money, he will use his credit card. So credit card is for short term फाइनेंस, सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, या फिर जैसे अपने रिलेटिव से या किसी से उसने उधार लिया तो वो भी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस होगा. ठीक है, जबकि वो लोन जो बैंक से लेता है मकान खरीदने के लिए वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस हुआ. तो ये चेक करना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को. देन ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इनटू डेट एंड इक्विटी. अब यहाँ पे हमने बोल दिया कि हमको लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस का अमाउंट डिसाइड करना पड़ता है, लेकिन उस लॉन्ग टर्म फाइनेंस में भी वी नो दैट देर आर लॉन्ग टर्म सोर्सेज. ओनर्स फंड होते हैं या बोरोवर्स फंड भी हो सकते हैं. बोरोवर फंड में होते हैं डेट ना, और ओनर्स फंड में होते हैं इक्विटी. तो अब इनका जो लॉन्ग टर्म का फाइनेंस का ब्रेकअप है, जिसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, डेट इक्विटी रेशियो, तो ये भी डिसाइड करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है, विच अफेक्ट्स द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. देन फाइनली ऑल द आइटम्स विच आर शोन इन द पीएल अकाउंट. जैसे कि अब फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो अब उसका डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन विल बी शोन इन द पीएल अकाउंट. इफ़ देयर आर मोर डेट, dependency of organization is more on debt, then there will be more interest payable on the debt, so that is also shown on the PL account. So all these things are reflected here also. Then let us see quickly what are the objectives of financial management. The main or the primary objective of financial management is to maximize the shareholders wealth, or to do value addition to the shareholders wealth. So what is the meaning of value addition और maximization of shareholders wealth? इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड्स मिलते हैं वो gradually and consistently it should increase. Suppose the shareholders had bought the shares, initially he was receiving dividend at the rate of 5%. So gradually it should increase, it should not go down. And also simultaneously what will happen when the shareholders dividend increases, the market value of shares increases, because the demand will be there for such shares where there is more dividend rate. So in that manner market value of shares will also increase. So when there is increase in the market value or share price, then it is also known as capital gain. So this maximizes or this increases the shareholders wealth. So that is the main or objective of financial management. But to achieve this objective there are certain other sub objectives which are to be achieved. First is profit maximization. So if the company is earning profit, that means a profitable company will have the chance or opportunity to pay more dividend to their shareholders. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ध्यान देना है. देन मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी. सो जो रिजर्व्स क्रिएट करते हैं या री इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट को, उसके थ्रू मेंटेन करते हैं लिक्विडिटी, ताकि कंपनी को लिक्विडिटी क्रंच न फेस करना पड़े. लिक्विडिटी क्रंच होने से क्या होगा, उनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स फुलफिल नहीं होंगी और दैट विल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वेयर द रिटर्न एक्सीड्स द कॉस्ट, दैट शुड बी सेलेक्टेड. एंड ऑल्सो द आइडल फंड शुड नॉट बी केप्ट. आइडल फंड्स क्या है, वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है. द सेम फंड विच कैन बी यूज्ड टू जनरेट इनकम should not be allowed to remain idle. So there should be proper utilization of funds. ज़्यादा over utilization भी नहीं करना है, under utilization भी नहीं करना है. Then to meet the financial commitment with creditors. तो financial management का ये भी objective है कि they should achieve or they should meet the financial commitment with the creditors, because this is going to increase the credit worthiness of the company. Credit worthiness of the company, when it will increase, automatically the shareholders wealth will maximize, because the dividend payment and the market value of share will increase.
So thank you for watching. Happy learning. Keep watching. In the next videos, we will see the major decisions of financial management. Thank you.